Good morning, students. Today we will start with a new chapter, that is chapter number 6, ratio and proportion. I remember last exercise we did was exercise 2.7. If you have a doubt in any of the parts, you can just ask me. One part I gave you homework, I'll discuss that if you have a doubt. Now, ratio and proportion. What do you understand by ratio? Ratio is the comparison of two or more quantities of the same kind by division, okay? Whenever we are comparing two things, okay, by the process of division, we say that is a ratio, okay. If A and B are two quantities of the same kind, then the fraction A upon B is the ratio of A to B. It is written as A is to B. It is written as A is to B. This is the first term, which is also known as the antecedent, and this is the second term, which is known as the consequent. Students, you will make a note of this, okay, in your maths 1 only. Equivalent ratios. The ratio are called equivalent if the fractions corresponding them are equivalent. For example, students, if I say this is a ratio, okay. Now if I try to find out the fraction which is corresponding to this, you will say, ma'am, it will be 1 by 2. You will just write the ratio in the form of a fraction, okay. If I want to find out an equivalent ratio to this ratio, the fraction which is equivalent to this fraction will be the ratio equivalent to this ratio. तो अगर मेरे को इसके लिए equivalent fraction निकालना है तो हम क्या करते हैं, we either multiply with the same number in the numerator denominator or we divide with the same number. So I will multiply up also 2, down also 2. I got my answer as 2 upon 4. So equivalent ratio of 1:2 can be 2:4. अगर मैंने 1/2 को मल्टीप्लाई करा होता अप डाउन 3 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाता 3/6. तो एक और इक्विवेलेंट रेशियो आ गया 3:6. 3:6, 2:4, 1:2. They are all equal ratios, so they are also called equivalent ratios. But students, the terms here are different, but still we are calling them equivalent. Equivalent means equal only. Why are we still calling them equal, students? Because these ratios, they are not in the simplest forms. For a ratio to be in the simplest form, it should not be in fractions. क्या ये फ्रैक्शन में है रेशियो? ये फ्रैक्शन में नहीं है. ये एक नेचुरल नंबर है 2, ये भी एक नेचुरल नंबर है 4, ओके. और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नो, दिस इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सो यूजली व्हेन वी लीव अ रेशियो, वी शुड लीव इट इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आप पूछोगे मैम फ्रैक्शन में कैसे होते हैं रेशियो? जैसे मैम ने बोला 1:2. अगर मैम इसकी जगह बोलती है 1/3:1/4, ये भी रेशियो की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, बट क्या ये नेचुरल नंबर है? नो. इसमें फर्स्ट टर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में है, इसमें सेकंड टर्म भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, बट यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं थी, तो ये वाला रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ओके. Students, we have to keep certain things in mind in this chapter ratio. Whenever we find ratio of two quantities, okay, they have to be the same. For example, if I'm talking that this first quantity is related to weight, and then second should also be the quantity which is related to weight, okay. And let's say if they are in same, what to say, if the quantities are same, their units also have to be same. So first thing is the quantities have to be same. Both should be weight, or both should be length, or both should be like what to say, it should be capacity. They have to be the same quantity. Moreover, the units also have to be same. If I say this is kg, this is grams, I can still not find the ratio. First I will have to make the units same, then only I can find the ratio. Students, when I'm finding the ratio of two things, okay, let me take an example. I'm finding out the ratio of 200 grams and let's say 500 grams, okay. The quantities are same, both are weight, the units are also same, okay, grams and grams. I can find out the ratio. To find out the ratio, the first quantity goes as a numerator, the second quantity goes as a denominator. Because both are grams and grams, students, the gram will cut with a gram, 2 zeros cut with 2 zeros. Answer came 2/5, which means 2:5. Students, that is why it is said that it has no units, because the ratio is a number, it has no units, because the units get cancelled out, okay. So students, we will try to proceed. Exercise 6.1. In the question number 1, it is saying express the ratio in simplest form. First and second part you will do. In this there is nothing, just change this fractions into the first of all improper fraction, then you can do the solving, okay. I will solve the third part. So it is saying express the ratio in simplest form. Why is it asking in simplest form? Because when the ratio terms are in fractions, it means it is not in simplest form, okay. Or if the ratio is not in simplest units, or it is not in simplest form or in the same units, then also we have to do in the simplest form only. So what am I going to do is that I can see the denominators are 5, 10 and 15. This is the ratio with 3 terms. A ratio can have 4 terms also, okay.
So I can see the denominators are 5, 10 and 15. Now I don't want the denominators because a natural number, I just want the numerators to be there, no denominators. So just to remove the denominators, what I will do is I will find out the LCM of the denominators. Okay, अब LCM हम find करेंगे, क्या हो जाएगा अगर हम LCM find करेंगे? We will get a term which will be a multiple of all the numbers. Okay, let me see. 5 1s are, 5 2s are, 5 3s are, 2 1s are, and then 3 1s are. 5 2s are 10, 3s are 30. So students, LCM came out to be 30. Now students, these things you can show in the rough column on the right hand side, or you can show in the fair column. It is your choice. Okay, now you're seniors, it is up to you to decide. Okay, but it should be seen, it should be visible to the teacher. Now what I will do is this LCM, what I will do is I will take each and every term, I will multiply the LCM with this 30. Is to sign, see I'm just putting what, 1 by 5 I wrote into the LCM, which is 30, is to 1 by 10 is the second term, I will multiply that with 30. 1 by 15 I am doing, I will multiply by 30. Because I am multiplying all the terms of the ratio by the same number, the ratio will remain same. If I divide all the terms of the ratio with the same number, it will be same. So that's why I am doing this. Okay, so 5 1s are 5, 5 6 are 30. 10 1s are 10, 10 3s are 30, 15 1s are 15, 15 2s are 30. So what my answer came, 6 is to 3 is to 2. This is my ratio in the simplest form. It is no longer in a fraction form. So students, it is understood. First, second part you will do first, and then the third part I have done it for your reference. Now question number 2, students, 1 to 4th part you will do yourself first, and then 5th part and 6th part I am solving for you so that you understand. Find the ratio of the following in simplest form. This is in minutes, this is in hours. Okay, so I cannot find the ratio because the quantities are same, दोनों time की quantities हैं बेटा, but the units are not same. So I will change hours into minutes. Preferably we change this bigger unit into small unit because multiplication is easier than division. So what am I going to do is 1.5, it was hours. Okay, I will change this into minutes. Before this I should have written that 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, so I will just enclose this in a box. 1.5 hours is equal to 1.5 multiplied by 60. If I do the multiplication, my answer will come 90 minutes. You can do in the rough column. Now I can find the ratio, the required ratio, or you can just write ratio is equal to, what will be the ratio equal to, what was the first term, 25 minutes. 25 न्यूमरेटर में लिखेंगे अपॉन डिनोमिनेटर में 1.5 नहीं लिख सकते क्योंकि वो आवर्स में है, तो उस आवर्स को हमने मिनट्स में चेंज करके क्या फाइंड करा है, 90. सो 25 अपॉन 90. कैन आई लीव माई आंसर एज 25 इज टू 90? नो. वाई? बिकॉज I have not cancelled it. I have not made it into simplest form. I will cut with the table of 5. 5 5s are 25. And then I think this will be coming 18. Okay. So I don't think I can cut it further. My final answer will be 5 is to 18. I cannot leave it in a fraction form. I have to leave it in the ratio form like this. Okay. There is another way of doing this, students. If you are, if you have a hand on this, like it will be, if you practice more of it, you will be easily able to do in future. How? You can simply write ratio is equal to 25 upon, हमने मिनट्स वाला एज इट इज ले लिया 25, आवर्स वाला हमने कैसे लिखा, देखो डिनोमिनेटर में 1.5 नहीं लिखा, 1.5 इंटू 60 लिख दिया. 1.5 इंटू 60 का मीनिंग है कि मैम ने 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में चेंज कर दिया है. अब मैम यहाँ से डेसिमल रिमूव करके ऊपर 10 लिख देगी. 0 कैंसल्स विद 0. आई कैन कट दिस टेबल. 5 5 5 are 25, 5 3 are 15. Up is 5, down is 3 6 are 18, which is again 5 is to 18. I have demonstrated you 2 ways to do it, students. It is your choice which way you want to follow. Okay, but if you do the conversion here or you do the conversion here, it has some marks weightage. Okay, so be careful when you do it. Now students, question number 5th part also, wait, I have done the 5th part with you. The 6th part also I had to do with you. This is the 6th part. Okay, so the 6th part says, students, it is 30 days to 36 hours. You can see that, students, this is a small unit, this is a bigger unit. I will change this into what? Hours. One day में कितना hours होता है? 24. तो 30 days में कितना होगा? 30 into 24. So how will I do? I will write down ratio is equal to
जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, अगर बिगर यूनिट वाला पहले है तो उसको ऊपर लिखो, नीचे स्मॉल यूनिट वाला लिखा 36, 36 को चेंज नहीं करना है, 30 को चेंज करना है बाय मल्टीप्लाइंग विथ 24. नाउ दिस इज ऑल्सो इन आवर्स, दिस इज ऑल्सो इन आवर्स, बोथ क्वांटिटीज आर इन आवर्स. आई कैन कैंसिल विद द टेबल ऑफ 6. हाउ? 6 6 are 36 and 6 4s are 24. Now with the table of 2, or let me do like this, 6 1s are 6, 6 5s are 30. अब ऊपर क्या है, 5 4s are 20, नीचे क्या है सिर्फ 1. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20:1. Okay, this is my answer. Now let's look at question number 3. In the students, A is to B is 3 is to 4, B is to C is 8 is to 9. Find A is to C. इसका मीनिंग समझो. We are given two ratios. First ratio is A is to B 3 is to 4. Second ratio is B is to C 8 is to 9. A is to C they are asking. Don't think students that A is 3 and C is 9. You cannot relate the two ratios until and unless the common term in both the ratios is same. इस वाले रेशियो में और इस वाले रेशियो में कॉमन टर्म कौन सी है, इट इज़ बी. इसमें एस टू बी आ रहा है, इसमें बी टू सी आ रहा है. सो कॉमन टर्म इज बी, बट इज द बी सेम. इसका बी सेकेंड टर्म है, यहाँ पर क्या है वो 4 है. इसका बी फर्स्ट टर्म है, वो क्या है 8. तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 8 है. सो दे आर नॉट सेम, सो वी कैन नॉट राइट ए इज टू सी एज 3 is to 9. वी कैन नॉट डू दैट. सो पहले हम क्या करेंगे, अवर फर्स्ट टास्क इज टू मेक द सेम टर्म इक्वल. दोनों में सेम टर्म थी, कॉमन टर्म क्या थी बी, हम उसको सेम बनाएंगे. लाइकवाइज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या था, ए इज टू बी 5 is to 8 है, बी इज टू सी 18 is to 5 है. इसमें भी टू रेशियोज गिवन है. इसमें ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना है. चाहे आपको ए इज टू सी फाइंड करना हो, चाहे आपको ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करना हो. स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेक द कॉमन टर्म इक्वल, देन ओनली यू कैन कनेक्ट बोथ रेशियोज, अदरवाइज नॉट. आई विल टेल यू स्मॉल ट्रिक टू रिमेंबर दिस. फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, बी एंड सी आर फ्रेंड्स. They have to be, there has to be a common thing so that A and C can be friends. A और C friends तभी होंगे ना जब B सेम होगा. ओके, तो B को सब सेम पर्सन होगा तभी तो A और C की फ्रेंडशिप होगी, तभी, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन. सो वी हैव टू मेक B एज सेम. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी विल जस्ट राइट A is to B इक्वल टू 3 is to 4. गिवन पार्ट लिखा. इसको बच्चे हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. लाइक वो स्टूडेंट्स मैम लिखेगी B इज टू C, क्या गिवन था आपको, 8 is to 9, ये तो गिवन पार्ट था. इसको मैम ने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया, B अपॉन C इज इक्वल टू 8 अपॉन 9. B इज टू C को लिखा B अपॉन C, इक्वल टू साइन एज इट इज लगाया, 8 is to 9 को लिखा 8 अपॉन 9. ठीक है, मैम ने दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया गिवन पार्ट को. अब B को सेम बनाना है तो हम B को सर्कल करेंगे. ठीक है, यहाँ पर B क्या है 4, यहाँ पर B क्या है 8. अब 4 और 8 का हम क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम. 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है. तो बच्चे 8 अगर एलसीएम है दोनों का तो दोनों को 8 ही बनाना है. जो एलसीएम होता है दोनों को वही बनाना है. ओके, वी विल मेक इट सेम. हाउ, 8 इज ऑलरेडी 8, वी हैव टू मेक दिस एज 8. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ 2 एंड दिस ऑल्सो विथ 2, बिकॉज इट इज़ लाइक अ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में कभी भी हम एक टर्म को चेंज करते हैं तो दूसरे को भी चेंज करना होता है. कभी हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा. लाइकवाइज. ओके, सो वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विथ 2, सो दिस ऑल्सो विथ 2. दिस विल बिकम व्हाट, 6 अपॉन 8. और ये क्या बना हुआ है, 8 अपॉन 9. अब देखो बच्चे, कॉमन टर्म क्या है दोनों में, 8 और 8. सो दिस इज A, दिस इज C. सो यू कैन सिंपली राइट डाउन स्टूडेंट्स, A इज टू C इज इक्वल टू 6 is to 9. अब आप लिख सकते हो क्योंकि आपने जो B कॉमन टर्म थी दोनों की 8 और 8 बना दिए. लेट्स ट्राई दिस वन. A is to B is equal to 5 is to 8, जिसको हम क्या लिखेंगे, A upon B is equal to 5 upon 8. B is to C is equal to 18 is to 25, which means B upon C is equal to 18 upon 25. So we will circle the B. Here it is 8, here it is 18. अब 8 और 18 का LCM लेके देखते हैं क्या आता है. Let's find out. 8 and 18 I will do with the table of 2. 2 4s are, 2 9s are, 2 2s are 9, 2 1s are and 9. Then 3 1s are, 3 3s are, 3 1s are, 1s are. And these are 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 8 9s are 72. So LCM came 72. This tells us that we have to make both the B's as 72. इस वाले B को 72 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 के टेबल में 72 कहाँ आता है, 9 पे. तो नीचे भी 9 ऊपर भी 9. माई आंसर केम 45 अपॉन 72. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मत सोचना डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज यूजुअली व्हाट वी डू इज व्हेन वी टेक द एलसीएम वी ट्राई टू चेंज द डिनोमिनेटर एंड देन द न्यूमरेटर. हियर इन दिस केस वी हैव टू मेक B as 72. So 18 what you will multiply with so that you get 72. You will multiply 18 with 4. So down also you will multiply with 4. 72 came up and down it will come 100. अब देखो दोनों भी सेम हो गए, so you can easily write down
A is to B is to C. यहाँ पर A is to C नहीं फाइंड करना था, A is to B is to C फाइंड करना था. A is what बच्चे 45 बिकॉज A के सामने 45 है, B 70 to 72 है, C क्या है 100. ओके, सो 45 is to 72 is to 100. प्लीज स्टूडेंट्स डोंट थिंक दैट दिस इज 2 कैन कैंसिल विद द टेबल ऑफ 5. अगर आपको कैंसिल करना है तो 3 को ही कैंसिल करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट कैंसिल. So students, you will do till question number whatever I am solving, you have to figure it out, okay? And the remaining, you know what homework is going to be there. Let me do question number 5. If 3a is equal to 2b is equal to 5c, find a is to b is to c. Students, in these they are saying these 3 are equal. जब इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके साथ 2 को और इसके साथ 5 को, तभी ये इक्वल हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू से? लेट 3a इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 5c इक्वल टू 1. हमने इन तीनों को किसके इक्वल मान लिया? क्योंकि तीनों इक्वल थे, हमने मान लिया कि ओके फाइन, लेट देम ऑल बी इक्वल टू 1, अ कांस्टेंट 1. ओके, व्हाई आर वी डूइंग दिस? इज जस्ट ट्राई टू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. हमें रेशियो फाइंड करना है एस टू बी टू सी का. ओके, so what I will do is, because all 3 are equal and they are all equal to 1, so I will take them one at a time. कि सारे इक्वल हैं और 1 के इक्वल हमने लेट कर लिया है, तो अब हम इंडिविजुअली लेंगे. 3a 2b के इक्वल भी है, 5c के भी इक्वल है और 1 के भी इक्वल है. तो मैंने सिर्फ किसको लिया? c. 3a इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 3a इज इक्वल टू 1, 2b इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 5c इज ऑल्सो इक्वल टू 1. ओके, so what I can do is, you remember that linear equation, what did we study? Whenever any constant is there, a number is getting multiplied there, it will get divided. तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/3 बेटा. what will be the value of b? It will be 1/2. what will be the value of c? It will be 1/5. I got a, b and c. okay, right now my ratio of a is to b is to c is what? 1/3 is to 1/2 is to 1/5. so 1/3 is to 1/2 is to 1/5. But students, after finding the ratio, I realize it is not in simplest form. So to make it in simplest form, what I will do is, I will take the LCM of 3, 2 and 5. Simplest form में क्यों नहीं है? क्योंकि ratio fractions में है. Okay, so I will take the LCM of 3, 2 and 5 and my answer will come 30. Okay, it will be 30. So I will multiply all the terms with 30. 1/2 also with 30. 1/5 also with 30. What will be my answer? 10 is to 15 is to 6. Okay students, so I have explained you question number 5 also. Let's come to question number 6, which I am giving you to solve as homework. In this question, what are they saying? Out of income of rupees 120, this is the income. Okay, means the money the person is earning. A laborer spends rupees 90. This is the money which was spent. Okay, so students, if this is the income, this is the money which is spent on food and shelter and saves the rest. इतनी income है, means this the person is earning. So we will write down income is equal to how much rupees? Rupees 120. Then we will write down spending. Spending is also known as expenditure. So but I will write down money spent. Yeah, I should write money spent, which is rupees 90. अगर इतनी इनकम में से इतना स्पेंड हो रहा है तो बाकी क्या हो जाएगा? सेव. सो वी विल राइट डाउन सेविंग्स इज इक्वल टू रुपीज़ 120 माइनस 90. हाउ मच विल वी गेट? वी विल गेट रुपीज़ 30. इतना मनी सेव हो रहा है. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ इज स्पेंडिंग टू इनकम, सेविंग टू इनकम, सेविंग टू स्पेंडिंग. स्टूडेंट्स, whenever we are giving 2 things, the third thing we always have to find, then only we should calculate the ratio. First part, students, always be careful whenever you are solving the answer. Don't just write the word ratio. When it is saying like this, you will write like this: ratio, find the ratio of his, ratio of spending to income. Copy spending to income. स्पेंडिंग कौन सी मनी थी? टेल मी. इट इज़ रुपीज़ 90. तो 90 को हमने लिखा न्यूमरेटर में. और इनकम कितनी थी बच्चे? इट वॉज 120. सो मैं 120 को कहाँ लिखा? डिनोमिनेटर में. I will not write as 90 is to 120. I will have to make it in simplest form. Cut with the table of 3. 3 3s are 9. 3 4s are 12. 3 is to 4 is my ratio. Okay. Students, I have done the first part. You will do the second and third part. So students, what is your homework? You will do chapter number 6. I gave you 2 definitions in the beginning. You will write those 2 definitions also. Okay. And after that, you will do exercise 6.1 till question number 6. Okay. 6.1 till question number 6. It should be complete with all the parts, including the classwork parts.